trouble your lordships. I need not trouble your lordships. Then, but it's rigidity powers, it's important. Page 19, PDF 19. There is a heading of rigidity powers. It was agreed that while under the present Indian constitution, the rigidity powers vested in the center in respect of all the states other than Jammu and Kashmir, in the case of our state, they rested in the state itself. This position is compatible with Article 370 of the Constitution of India and the instrument of accession on which this article is based. We've always held that the ultimate source of sovereignty resides in the people. It is therefore from the people that all powers can flow. Under these circumstances, it is up to the people of Kashmir through this assembly to transfer more powers of mutual advantage to the custody of the union. So what happens ultimately, and I'm just, since I will come to that later, is that Parliament exercised the will of the people of Jammu and Kashmir when they abrogated the article. That's what happened. They took upon themselves the constitutional responsibility of saying that we are now the legislature. We are the Constituent Assembly. And we will exercise the will of the people of state of Jammu and Kashmir to say that we abrogate 370. In essence, that's what happened. Is that possible constitutionally? Is that envisaged by 370? Is this not an exercise of political power? Without reference to 370? And can such a power be exercised in the manner in which it was exercised? That's a matter of procedure. Then there is citizenship. We need not go into it. Fundamental rights. We don't have to go into all this. Let us now kindly come to list of dates again. Right, back at 42 months. Item 37. Article 370, sub-article 3. The PDF, Madam, 42. My Lord Justice, have I had it? Yes, 37. Yeah. Under I just was wondering whether all of your lordships have it. I have to say, Mother, that I've been and even though I say it to myself, a good student because I can access it immediately. This is my second constitution where I see. the Chief Justice who's made me take to this. No, Mother, I done. My Lord said to me, I'm not going to allow you to argue on your. So I had to learn. Yes. 37 minutes. Under Article 370, sub-article 3 of the Constitution, the President, after a recommendation of the J&K Assembly, issued notification 44 modifying 370 to include an explanation that the phrase state government meant the Sadr-e Riyasat acting in aid and advice of the Council. Kindly note that. That was done by the Constituent Assembly. That's the only time others they exercise their powers. With reference to 370. On 14th of May, 1954, with the concurrence of the government of Jammu and Kashmir, the President issued the Constitution Adaptation to Jammu Kashmir Order 1954, which came into force on May 14, 1954. This order superseded the Constitution application to Jammu Kashmir Order of 1950, which had only those limited provisions. Paragraph 2 of the said order
set those provisions of the Constitution, which in addition to Articles 1 and 370, because that order only had Articles 1 and 370, would be applicable, and other than one, would be applicable to the state of Jammu and Kashmir. Notably, a second proviso was introduced into Article 3 as applied to the state of Jammu and Kashmir in the following terms, provided that no bill providing for increasing or diminishing the area, this is also very important, of the state of Jammu and Kashmir or altering the name or boundary of that state shall be introduced in Parliament without the consent of the legislature of that state. Your Lordship knows, Mullahs, Article 3, they can change the boundaries. What happened in this case was, not that they changed the boundaries, Mullahs, they converted it into a union territory, which is the other problematic issue, which of course we'll have to argue later. You can change the boundaries of a state, you can bifurcate the boundaries of a large state into smaller states, but never in the history of this country has a state been converted into a union territory. You can carve out a union territory out of a state. You can carve out, but you can't have all of Madhya Pradesh being a union territory tomorrow. Understanding some assurance that on assembly elections being held, the Jammu and Kashmir will be a state. Or No, I read that's somewhere. true, but what they have converted it into a union territory as of now. I mean, that's unthinkable. And under the article for Jammu and Kashmir, there was a special provision that had to be consented to. That was also not done. So, Mullahs, you move away from representative democracy, convert it into a union territory under your direct rule. You do away with representative democracy, and 5 years have passed. Every day we hear that we are going to soon have elections. But there has to be a constitutional basis for doing this, Mullahs. And kindly note one thing. In May 2019, there were parliamentary elections in the state of Jammu and Kashmir. In 2019, May, 3 months after this. This happened on the 6th of August. September, October, November, December, May. You have parliamentary elections. So you can hold parliamentary elections, but you will not hold state elections. But I'm moving away from that to another issue altogether. So, Mullahs, then 1039, 1711-1956, the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, in exercise of its constituent powers, approved and adopted the Constitution of Jammu and Kashmir. Which is why I started off with the proposition that the concept of a Constituent Assembly is a political exercise. That political authority, that political body can decide on the future of the state. Could have decided on the future of the state. But that's a political decision. You want to abrogate 370, abrogate 370. You want to go integrate into India completely, say we don't need a constitution. But that's a political act. That political act cannot be exercised by parliament, by a legislative body. Because that legislative body is controlled by the Constitution, and its functions are controlled by the Constitution. It can't go beyond that. Which is why I made that statement at the beginning. Then verse 40, the Constitution of Jammu and Kashmir 1957 came into force on January 26, 1957. By means of this Constitution, the people of the state of Jammu and Kashmir, having solemnly resolved in the presence of the accession of this state of India, which took place on 26th day of October 1947, to further define the existing relationship of the state with the Union of India as an integral part thereof. That's declared in the Constitution. So nobody can question that. Nobody need question that. Nobody can say that we are not being regarded as, we were not saying that we are not an integral part of India. Article 1 applies. Article 1 applies. And the Constitution defined that relationship.
And having defined that relationship, you can't just jettison it. Section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir provided that the legislative power of the state extended to all matters except those with respect to which Parliament had power to make laws for the state under the Constitution of India as applicable. Applicable to the state of Jammu and Kashmir. Legislative powers in the state were to lie with the Legislative Assembly and the Legislative Council. Significantly, Section 147, which dealt with amendments to the Constitution of Jammu and Kashmir, provided that no bill or amendment seeking to change the provisions of the Constitution of India as they applied to Jammu and Kashmir would be introduced or moved in either of the state legislatures. They had no authority once the Constitution had come into force and the orders passed. Then on 21/11/1964, the Constitution application to Jammu Kashmir Third Amendment Order of 1964, that is CO 71, which amended the 54 order, made Article 356 applicable to the state with one modification, that the expression included the Constitution, excluded the Constitution of Jammu and Kashmir. Included, yes, included the Constitution of Jammu and Kashmir. Those are there in all which have been passed. I'll have a list. You can just give the list. Volume 3, you have all the orders. This, you have now made your point on this. So all the orders. I'm not asking your lordship to go through. I'm not even going to read it, Manas. Yeah. 53, Yeah, we're not going to go into all this, Manas. 54, about 54 orders. 54 orders are there, around 54 orders. Because of the. Yes, yes. The Of course, of the assembly, government section, the government, Manas. under D or under D1. Not, no, B2 or B2 or B1, D, D2, Manas. D2. D1. The D only has one, Just D, the Madam. proviso. I think it's just D. D Yeah. doesn't have a number 2 or. And most of them are amendments of the 54 order, Manas. 50 order, 54 order, and then amendments to the 54 order. That's what it is. Yeah, but is it necessary? My lord is saying. That out. Item 43. Yes. The lordships don't mind, it's PDF 44. The Kashmir Accord, now that's a political document. (1975) was entered into, my lords have it. PDF 44. The Kashmir Accord 75 was entered into between the Government of India and the Government of Jammu and Kashmir. Under Clause 1 of the Accord,
The relationship of the state of Jammu and Kashmir with the Union was to continue to be governed by Article 370 of the Constitution. Now kindly note, Malaj, the temporary provision was over. Still be governed. Why was this required to say it is to be governed if it is a permanent feature? Sorry? Why was there a requirement 27 to say this will continue to govern when it was a permanent feature? Malaj, it also reiterated the residuary powers of the state. Malaj, that's not the only thing that happened. It's just a reiteration of the position that was accepted by the government of India throughout, which is the constitutional position. After all, it's a political accord, Malaj. I mean, it has no legal basis that way, but it tells you of the intent of the signatories, Malaj. Political change at that time. Yes, I know that. Malaj, in any case, 75 is a momentous time in the history of this country. Yes. Luckily, I was out of the country, Malaj, so I. The response to the Sheikh Abdullah settlement. Yes. So, fine. Huh? And jail for ultimately 14 years. The background is, Malaj, that whenever he came out, he was saying that, no, give us autonomy, give us autonomy. It is in that context that the accord was there, that you can't get out of 370. That's really the background to it. He was put in jail even by Mrs. Gandhi. So, Malaj, the rest of the list of dates. Kindly now see, come to straight to PDF 47. On 29th of March 2017. Then, of course, the clamoring began, remove 370, do away with 370. But that's a separate issue. I mean, we're not concerned with that. So You are on the 55 now? 55, exactly, man. Well, Lord Justice Khanna has 55. Justice Gawai. That's Suryakant. Yes. Member of Parliament Ratna Dinag raised a question whether the Minister of Law and Justice, as to whether the government proposes to amend and remove 370 related to Jammu and Kashmir in the near future. If so, details thereof, if not the reason therefore, whether this will help in providing equitable justice to the people of the state, and if so, the details thereof. Minister of State and Law and Justice, so and so. At present, there is no such proposal under consideration. These are only proposals. These are only proposals, all no throughout. This goes on, Malaj. Yes. Then 57 is Malaj
Section 92, this is important. Item 57. Section 92 of the Constitution of Jammu and Kashmir deals with provisions in case of a failure of the constitutional machinery in the state. Provision permitted the governor to, by proclamation, assume to himself all the powers and functions of the government of the state. Such a proclamation would, in terms of 92(5), require the concurrence of the President of India. Under 1923, would cease to operate 6 months after it was issued. On June 20, 2018, the governor, with the concurrence of the President, issued a proclamation under 92, declaring governor's rule in the state. This is important. Now we're coming to the present controversy. We can do it tomorrow, madam. We can then continue tomorrow. Deeply obliged. This is sick, Sam. Love it. You think we ever like this? From ComScience. Doing is the new learning with Dell. प्रदूषण पर दलीलें हैं, तो ये भी सवाल है कि आबो हवा की चिंता सेलेक्टिव क्यों है। खैर देखेंगे तो पाएंगे कि राजनीति ही ऐसी फील्ड है जिसमें बयानों की बमबाजी, आरोपों की आतिशबाजी पर कभी रोक नहीं होती। राजनीति खुद मुद्दे बनाती है और फिर खुद उसे सुलझाती है और फिर खुद अपनी पीठ थपथपाती है। 12 महीने सदाबहार रहती है, जैसे इस वक्त ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, जनसंख्या कानून, हिजाब, नकाब, मदरसा, नमाज, लाउड स्पीकर को लेकर है। तो आज की बहस इन्हीं मुद्दों पर। सिर्फ दो सबसे प्रामाणिक मेहमानों के साथ। इनमें से एक बैरिस्टर है तो दूसरे प्रोफेसर हैं। एक के पास तर्क है तो दूसरे के पास हर तर्क का तोड़ है। एक जाना माना वकील है तो दूसरा कहा जाता है वकीलों का भी वकील है। एक रोज सत्ता से सवाल पूछता है तो दूसरे ने अतीत में सत्ताएं हिलाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन बहस की शुरुआत हम करें और इनकी दलीलें और जिराएं हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। राम जन्मभूमि, जहाँ हमारी आस्था कहती है राम पैदा हुए, उसके लिए कोई और दूसरा जगह है ही नहीं। सारा हिंदुस्तान के हिंदू समझते हैं कि राम वहीं पैदा हुए जहाँ बाजपरी मस्जिद खड़ी है। मीटिंग पॉइंट खुद 1991 का एक्ट है। आप मॉडर्न इंडिया को मिडिवल इंडिया के चीज़ों को लेकर अगर आप उसको जंग की ज़मीन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 1994 में 1994 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसमें मुसलमान भी जज थे। क्या देश के प्रधानमंत्री भारत में उनके टेन्योरशिप में प्रधानमंत्री जब हैं तो क्या वो चाहते हैं कि 1980 और 1990 की वो उस हेट्रेड की, उस नफरत की तारीख को दोहराया जाए? ये देश के प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा। एक बार चैलेंज हुआ 2018 में, दोबारा कहा गया कि मस्जिद जो है वो अनिवार्य नहीं है मुसलमान के इस्लाम के लिए, इसको तोड़ा जा सकता है। टर्की में तोड़ते हैं, अरेबिया में तोड़ते हैं, मुसलमान के अनेक देश में तोड़ते हैं नए बिल्डिंग बनाने के लिए। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी मस्जिदों को
किसी की आस्था के लिए कुर्बान करूं तो वो हरगिज कोई भी एक गयूर भारत का मुसलमान तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये आस्था के ऊपर देश नहीं चल सकता। सवाल सिर्फ काशी मथुरा का नहीं है। अहम सवाल अब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है। एक्ट हटा तो उसके उस पार अंतहीन विवादों की एक लंबी लिस्ट हो सकती है, शायद 40-50 हजार नामों वाली। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि राजधर्म ना भूलें और इस एक्ट को बचाएं। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि वो एक्ट नहीं, अन्याय था। वोट के लिए मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं से की गई दरअसल जोर जबरदस्ती थी। बहैसियत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सांसद के मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूं, और मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनको याद दिलाया कि एक जो जनरल प्रिंसिपल होता है, ड्यूटी होती है एग्जीक्यूटिव की, वो पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन को वो उसको प्रोटेक्ट करे। तो इसीलिए हमने कहा, और साथ में हमने प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी में इस बात का याद दिलाया कि भारत की जो डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। तीसरा, वो कानून इसलिए बनाया गया था कि हमारे माजी में जो जख्म थे वो दोबारा ना खुले। और चौथी उसमें अहम बात यह है कि हम कब तक हिस्टोरिकल गलतियों को सही करते जाएंगे। अब तो भारत एक आज़ाद देश है, और उस आज़ाद देश में हमको अपने आज़ादी का जब अमृत उत्सव मना रहे हैं, और आज़ादी के जो हमारे जो लीडर और मुजाहिदीन थे, उनके ख्वाबों को पूरा करना, उनके ख्वाबों को पूरा करना इस तरीके से नहीं है कि ये ऐसा हुआ था 500 साल पहले, 700 साल पहले, हम उसको सही करेंगे। तो ये तो भारत को सही राह पर लेकर नहीं जा रहे। इसलिए हम जो आज़ादी के हमारे वैल्यूज़ है, फ्रीडम स्ट्रगल के, उसको भी सामने रखकर हमने प्रधानमंत्री से अपील की, और जो नॉन रेट्रोगेशन का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको फॉलो करने की जरूरत है। और आखिरी पॉइंट अगर आप देखेंगे मैडम, जो उस चिट्ठी में लिखा, छठा पॉइंट ये था कि हम एंडलेसली लिटिगेट नहीं कर सकते, और एक मॉडर्न इंडिया के लिए जरूरी नहीं है कि हम मेडिवल डिस्प्यूट्स को ही डिसाइड करते बैठे। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से अपील की कि ये अननेसेसरी रिलीजियस डिस्प्यूट्स को और भारत के डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करे कि वो 91 के एक्ट के तहत है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए उसको उसमें अमेंड नहीं करेंगे। जो भी एक्ट बनती है पार्लियामेंट से, वो संविधान के अनुकूल होनी चाहिए, संविधान का विरोध नहीं होना चाहिए। संविधान में ऐसी बातें हैं जिसको आप छू भी नहीं सकते, संशोधन की बात ही छोड़िए, छू भी नहीं सकते। धारा 32 जो अधिकार देती है हर व्यक्ति को कि वो सीधा संविधान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से पास हुई थी नरसिम्हा राव के काल में, जिस टाइम मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर था और मैंने वॉकआउट किया था। बीजेपी के उस समय मैं तो अध्यक्ष था जनता पार्टी का, फिर भी बीजेपी भी हमारी साथ दी थी, उन्होंने भी वॉकआउट किया था। हम लोग इस बात पर विरोध कर रहे थे कि जो एक्ट पास हुई मेजॉरिटी से, उसमें ये कहा गया कि राम जन्मभूमि की मंदिर बनाने की निर्माण की अतिरिक्त बाकी सब जो भी मंदिर मस्जिद ये थे, ये वो वैसे ही रहेंगे जैसे 15 अगस्त 1947 में खड़ी थी। अब इसमें संविधान के विरुद्ध में बहुत कुछ है। एक है, उसमें लिखा है कि हम एक नागरिक होते हुए संविधान के आधार पर अब कोर्ट में नहीं जा सकते इस विषय पर। माने धारा 32 में हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये हमारी जो मूलभूत अधिकार छीनी गई इसमें, वो एक संविधान का विरुद्ध में है। तो वो मोटी बात है। कई लोगों को ये प्रशंसा थी कि भाई इससे झगड़ा जो है मंदिर मस्जिद ये सब अब खत्म होना चाहिए।
40,000 मंदिरों को तोड़ा गया था, क्या आप दोबारा ताज़ी 40,000 मंदिर बनाएंगे? ये आप अपना अधिकार समझते हो? ऐसा लोग मुझसे पूछते हैं। साधु संतों ने 1964 में मीटिंग की थी, उसमें बड़े बड़े साधुगण आए थे और उन्होंने सब मिलकर के एक प्रस्ताव पास किया कि वो मंदिर जो और कहीं नहीं बन सकती है, जहां नष्ट हुई ही वहीं बन सकती है, उनको छोड़कर बाकी को हम चिंता नहीं करेंगे, मंदिर बनाएंगे, दूसरे जगह में बनाएंगे, पास में बनाएंगे, मस्जिद को तोड़कर नहीं बनाएंगे। ये तय हुआ था। यकीनन इसीलिए तो हमने ये चिट्ठी लिखी है। हमने प्रधानमंत्री को ये कहा है चिट्ठी में कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है भारत की, वो हमारे सिस्टम में एम्बेडेड है। हमने प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप अगर उस कानून को बरकरार रखेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस पूरे रिलीजियस कम्युनिटीज को देंगे, खासतौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी को। तो यकीनन हमको इस तरह की आशंका है, इसीलिए तो हमने खत लिखा है प्रधानमंत्री को और हमने उनको याद दिलाया कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि आप इस कानून को प्रोटेक्ट करें और आपकी सरकार इस कानून को अमेंड ना करे, उसमें कोई हटाए ना इस कानून को। राम जन्मभूमि, जहां हमारी आस्था कहती है राम पैदा हुए, उसके लिए कोई और दूसरा जगह है ही नहीं। सारा हिंदुस्तान के हिंदू समझते हैं कि राम वहीं पैदा हुए जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है। वहां मंदिर तो थी, वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बिल्कुल साफ कह दिया कि जमीन के नीचे हमने खोदा और देखा, फिर इन्हीं तरह तरह के आधुनिक यंत्रों को भी लगा करके हमने पुष्टि की। तो राम जन्मभूमि तो दोबारा वहीं बनना है, क्योंकि राम वहां पैदा हुए हमारी आस्था के अनुसार, और कोई जगह नहीं है। तो मस्जिद की जगह में मंदिर बनेगी और इसके लिए हमने बहस करके करते करते जीत गए। क्योंकि जीते, क्योंकि मैंने ये पहली बार कोर्ट में लाया, कब 2015 को लाया था। उस तक तो सब क्या लड़ाई कर रहे थे, ये मेरी स्वामित्व है इस जगह में। मुसलमान ने कहा कि ये मस्जिद तो हमारी वक्फ बोर्ड की है, हिंदुओं ने कहा कि हम पुजारी थे और हम वारिस हैं उनके जिन्होंने मंदिर बनाई और इसीलिए हम इस मालिक हैं। मैंने कहा कि मैं हिंदू होने के कारण मेरा मूलभूत अधिकार है पूजा करने के लिए जहां मेरा आस्था कहती है कि राम पैदा हुए। If you want to make 1 lakh a month, you need 5 to 6 प्रमाण है temples. कि If you want to make 10 lakh a month, ये मेरी आस्था है। जीसस कहाँ पैदा हुई कोई बता सकता है? मोहम्मद अल-अक्सा से स्वर्ग गए ऐसा कहते हैं, कोई यानी प्रूफ दे सकता है, आधार दे सकता है, प्रमाण दे सकता है? ये हमारी आस्था है कि राम वहां पैदा हुए और इसीलिए ये मेरा मूलभूत अधिकार है। जहां तक मस्जिद है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि मस्जिद एक बिल्डिंग है, ये धार्मिक भगवान वहाँ रहता नहीं है, यहाँ नमाज पढ़ने का जगह है, सारे समुदाय के लोग आकर पढ़ सकते हैं, परंतु नमाज पढ़ने के लिए अपने ड्राइंग रूम में भी पढ़ सकते हैं, सड़क में भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मस्जिद को हटाने में कोई आपत्ति नहीं है धार्मिक इसमें। तो ये था कृष्ण जन्मभूमि, ये भी हो गया। यही बात, कृष्ण जन्मभूमि वहां पैदा हुए, सब मानते हैं कि मथुरा में पैदा हुए, और काशी विश्वनाथ में हमारी विश्वास है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कारगिल के द्रास की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। इस ज्योतिर्लिंग को वहां रखा था और यही बनेगी काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी। और कोई जगह नहीं है, दूसरी जगह में मंदिर मस्जिद बना लो। तो मस्जिद जो है अनिवार्य नहीं है मुसलमान के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी में लिखा कि आप ही कानून बदलने से रोक सकते हैं। ये भी लिखा कि ये आपकी ड्यूटी है। स्वामी का कहना है कि ये आस्था का सवाल है। मोदी क्या, वो तो भगवान की नहीं सुनने वाले। ओवैसी को डर है कि काशी मथुरा के बाद और भी मस्जिदों दरगाहों पर हिंदू दावे ठोके जाएंगे। स्वामी गारंटी दे रहे हैं कि बस काशी मथुरा होने दो, एक्ट में अमेंडमेंट होने दो।
फिर वो कोई दावा नहीं करेंगे। पार्लियामेंट सेट कर भी बाबरी मस्जिद के सिविल टाइटल डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो एक्ट है इसको नॉन रेट्रोग्रेशन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक सेकुलरिज्म से है और सेकुलरिज्म भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने जजमेंट में बात कही थी, जिसमें अब जो नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे उस जनाब चंद्रचूड़ साहब उस बेंच में थे, उस जजमेंट में बात लिखी गई। सुप्रीम कोर्ट के 1994 में 1994 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसमें मुसलमान भी जज थे और जाकर तो पढ़ने बोलिए और कहिए कि बताइए इसका आप इनकार करते हो, कभी इसका चैलेंज किया है? एक बार चैलेंज हुआ 2018 में, दोबारा कहा गया कि मस्जिद जो है वो अनिवार्य नहीं है मुसलमान के इस्लाम के लिए, इसको तोड़ा जा सकता है। टर्की में तोड़ते हैं, अरेबिया में तोड़ते हैं, मुसलमान के अनेक देश में तोड़ते हैं नए बिल्डिंग बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। ये आपको गूगल से ही मिल जाएगा, गूगल में जाकर आप टाइप करोगे तो मिल जाएगा आपको कहाँ कहाँ मस्जिद तोड़े जा रहे हैं सड़क बनाने के लिए। और हमें कहते हैं कि राम का मंदिर नहीं बना सकते हो, कृष्णा का मंदिर नहीं बना सकते हो, ज्योतिर्लिंग का मंदिर नहीं बना सकते हो, ये कैसे मान सकते? बनेगा, हम कोर्ट के जरिए करेंगे। इस बीच में नरसिम्हा राव ने वो कानून पास की थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें कहा कि यही बनेगा और नहीं बनेगा, तुम कौन होते हो? अनेक ठोकरें खाई हैं, लेकिन सब कहते हैं ये अच्छा है, ये सारा विवाद को बंद करो। मैं कहता हूँ बंद करेंगे, यदि ये तीन छूट जाएंगे तो हम भी इसके लिए सहमत हैं कि आगे से कोई मस्जिद मंदिर की विवाद नहीं होगी। तो या मुझे 2 और जोड़ने दीजिए राम मंदिर के साथ, या इसको हम रद्द कर देंगे। तो मेरा केस यही है, बाकी लोगों का कि इसको रद्द करो, प्राप्त करने का सदैव प्रयास। मैं कहता हूँ देखो रख लो, लेकिन ये 2 को भी उसमें जोड़ दो जहां राम मंदिर के लिए आपने एक्सेप्शन लिखी है, और संभल कर जो सेक्शन 5 है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, उसमें ये 2 भी जोड़ दो, फिर हम कहेंगे ये कानून रहेगा, इसको मान के चलेंगे, इसको हम चुनौती नहीं देंगे। देश के सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है रद्द करने, सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, ये अवैध है, इसीलिए उसको हम स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। माइनस टेम्परेचर में भी बीजेपी ने चैलेंज नहीं किया गया, मगर जितने पिटिशनर्स गए हैं क्या उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? नीचे नहीं किए। और मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ, गलत कह रहा हूँ, बल्कि मुझे याद आ रहा है, अगर मेरी मेमोरी सही है तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज ने मौजूदा एएसजी साहब से पूछा था कि आपकी पर्सनल राय क्या है, तो उन्होंने पर्सनल राय ये कहा कि वो एक्ट की ताईद में नहीं थे वो। और कई बीजेपी के लीडर्स का भी आप प्रेस स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, वो कह रहे कि नहीं इस एक्ट की जरूरत नहीं है, इस एक्ट को खत्म करना चाहिए, इसलिए हमने प्रधानमंत्री को ये छुट्टी लिखी। तो डर से मैं क्या करूं? भारत को यदि आजादी मिली है, मैं कहता हूं कि वो सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं कि ये 2 जो अतिरिक्त हैं, हम सबको आजादी, काशी विश्वनाथ और मथुरा, इसको भी मैं मस्जिद को हटाने के लिए तैयार हूँ, और मस्जिद मंदिर आप बना लीजिए, हमें दूसरा जगह दे दीजिए, जैसे राम मंदिर के लिए हमने बाबरी मस्जिद के लिए फैजाबाद जिसका नाम है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, वहाँ शानदार एक मस्जिद बन रही है, वैसे ये इनके लिए भी शानदार बन रही है, ये कह दीजिए, फिर हम कोई नहीं छुएगा। विदेशी गोली हमारे, और मैं बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी अकेला कुछ फैसला नहीं कर सकता है, ये तो पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी क्या कौन सी है उस पर निर्भर करेगा। और मैं नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई जिद भी नहीं व्यक्त किया कि हाँ मैं बना के छोड़ूंगा। ये सब लोग मेरे जैसे लोग जो बीजेपी में हैं और दूसरे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेहनत करके बीजेपी को जिताई, उन्होंने इसको किया। ओवैसी को डर है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म हुआ तो देश में